Hello guys, welcome back to my channel, Learn with Vinci. I hope you all are doing great. I hope so you all are fine. So, आज क्या करने वाले हैं? Today हम लोग टेस्ट लेंगे अपने आप का. टेस्ट से सब कोई डरता है. Don't have to be scared. I will teach you how to tackle the questions which will be a part of tense. If it is a part of tense, then you don't have to worry. I'll be showing you few examples. I'll show you how to convert them into a different form of tense. चाहे वो प्रेजेंट टेंस में दिया हो, अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ रहेगा तो वो कैसे कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और इफ इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेगा. बट नीड नॉट वरी, आई एम हियर. आई विल टीच यू. एंड प्लीज ये बच्चे लोग अपना ये वीडियो को जरा ठीक से देखना, बिकॉज it is only and only for your examination purpose. So without any delay, let's begin with the video. Okay, so you have tense as a part of your syllabus. ठीक है. So जब tense आपका part of syllabus रहता है, so what is the basic thing that you have to take care of? Chapter बड़ा है, but क्या चीज आ सकता है? Simple सा बात है, the conversion from one tense to the other tense will be there. ठीक है. तो कन्वर्जन के लिए बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, प्लीज आई विल लीव द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर बाई चांस इफ यू हैवंट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोस ऑन द टेंस फैमिली, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. फर्स्ट बी क्लियर विद दोस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर आफ्टर कम एंड वॉच दिस वीडियो. तब जाके ये हेल्पफुल होगा. ठीक है. सो एग्जाम में क्या दिया जाएगा? एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड देयर आफ्टर the question will ask you to convert a particular sentence into a different form of tense. ठीक है ना. हर एक सवाल 1 मार्क्स का रहता है. If you get the answer correct, in 1 मार्क्स आपका पॉकेट के अंदर. That's great news. So that 1 मार्क्स is very कीमती. आप लोग सोचेंगे अरे यार ऐसे है, लेटर है, कॉम्प्रिहेंशन है, why do we have to look into the grammar portion even? क्यों इतना मेहनत करें? रुको. When you are writing that ऐसे यू नीड टू नो टेंस. अगर आप गलत टेंस में लिखेंगे आपको 0 मिलेगा, फिर बोलेंगे विंसी ने सिखाया नहीं. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम राइट नाउ दैट टेंस और एनी अदर ग्रामेटिकल रूल्स विल बी टेकिंग अ पार्ट ऑफ प्ले इन एवरी पोर्शन, whether you are writing a pressure writing as a part of comprehension, सब में काम आएगा. सो ग्रामर पोर्शन को छोड़ना मत इन द एग्जामिनेशन. सो कमिंग बैक, फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं. He is riding a horse. He is riding a horse. ठीक है ना. इसको बोला गया है that you have to convert this into say past continuous tense. This first sentence is he is riding a horse and this sentence has to be converted into past continuous tense. बड़ा सिंपल सा है. if you know the logic of tense, अभी तो शायद जो फॉलो कर रहा है मुझे रेगुलरली में, they should know that कि क्या होना चाहिए, आंसर क्या नहीं होना चाहिए. बट फिर भी जिसको आता नहीं है घबराने की बात नहीं है. आई एम देयर फॉर द वीकर सेक्शन. सो he is riding a horse. फर्स्ट स्टेप आपको नोट करना पड़ेगा while converting a sentence. पहले तो जो सवाल दिया है, the question, we have to see the question and read the question very carefully. हम लोग को अपने आप से सवाल पूछना है that भैया और दीदी बताइए which form is the sentence in. अभी जो फॉर्म दिया हुआ है वो which form is it in, which tense form is it in the current moment. So भैया ये हो गया आपका is is a part of present tense. riding हो गया. एक्शन जब भी एंड होगा ing से, रिमेंबर ऑलवेज आंख बंद करके सोच लो वो कंटिन्यूअस है, तो ये बन गया कंटिन्यूअस. और आंख बंद करके इफ यू सी दैट इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस इज में है तो भैया वो तो प्रेजेंट टेंस ही हुआ. इज अ फ्रेंड ऑफ अ प्रेजेंट टेंस फैमिली, एक मेंबर है वो भी. तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया कंटिन्यूअस. ठीक है. तो सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्टेप 1 पता चलिए कि
कौन सा टेंस में, विच टेंस इज इट फॉलोइंग इन? सेकंड, सी द टू पार्ट्स, इट सेज पास्ट एंड देन इट सेज कंटिन्यूअस. Past will be related to the helping verb and continuous will be related to the action. So जब कोई चीज को कन्वर्ट करना है, if you see that it continuous है और ये भी continuous में है, तो बस एक चेंज होगा, one change, that is आंसर हो जाएगा. The solution का ट्रीटमेंट बोलते हैं, we don't call it a solution, we call it treatment. ट्रीटमेंट हो जाएगा, he was riding a horse. He was riding a horse. ठीक है, he was riding a horse. This will be the correct answer to the example number 1. He is riding a horse. Past tense में was हो गया, is becomes was. Continuous अगर है तो आपका हो गया bread and butter, because this thing will not change. And hence वो ऐसे का ऐसे ही फॉलो अप हो जाएगा. सिर्फ only change will come is becomes is becomes was. So ये था present continuous sentence and it is converted into past continuous and वाह भाई वाह, your 1 marks is in your pocket. tense. He has never lived alone. ठीक है. Now step 1 क्या था? Step 1 should be very clear that हम लोगों को पता खुद को होना चाहिए that which tense does it falls in. ठीक है ना, which tense family does it belong to. तो देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं, समझते हैं.
Now, the easy way to find out कि वो कौन सा tense में है, look at the helping verb or the auxiliary verb. Here, the auxiliary verb is has. So, अगर थोड़ा रिविजन करवाता हूँ, रिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओके ना, वरना क्या हुआ, रिविजन नहीं करो तो 0 मिलेगा, गोलगप्पा मिलेगा और बोलेंगे आप लोग कि विंसी ने सिखाया नहीं. So, has. Perfect tense, when we are talking about the present perfect tense, has and have are the two auxiliary verbs which are required to keep in mind. ठीक है ना? So has जो होता है, it's a part of present perfect tense. Hence, this sentence belongs to a present perfect tense family. अब करना क्या है? भाई साहब, past perfect में complete करना है इसको. Now usually the action जो होता है in the perfect tense, it either ends by the third form of the verb or ed. So here the action is already ending with ed. So perfect का चीज दिया हुआ है. So past ये word को देखेंगे and the basic answer to this is the treatment is that भैया इसको बदल दो. Okay, so answer हो जाएगा he. Now ask a child that past perfect का auxiliary verb क्या होता है? What is the auxiliary verb for the past perfect tense? And I hope so that they should tell you the answer as had. Make sure the child is very clear with the previous concepts. Otherwise नहीं होने वाला. So he had and this thing remains the same. He had never lived alone. ठीक है? Clear है? So 3 examples done. Has becomes had because ये present form of the perfect tense का है, ये past form of the perfect tense का है, and rest answer remains the same. Okay? Okay. Now, I hope so this concept is clear till now. Let's go on to the next example. Don't be scared when you're looking at grammar. कोई बच्चे बोलते हैं अरे in my जब एग्जाम आता है ग्रामर का I study for a different paper. True. If you are telling me that you are preparing for other papers, that must be that you know everything in grammar. अभी तक मुझे खुद को पता नहीं है सब कुछ चीज, even though I make mistakes till now. So please do not take grammar paper as lightly as you think as it is. Please concentrate. Okay, so 4th one. I will be writing my exam this time tomorrow. This time tomorrow. Okay, I will be writing my exam this time tomorrow. Okay, I want to convert this into a past continuous tense. Okay, I will be writing my exam this time tomorrow. Okay, now how do you convert this sentence into a past continuous tense family? Now, I know I haven't done future tense with you all, but पकड़ लेते कि एक simple sentence future tense का दिया हुआ है. But this question, the sentence doesn't matter. What matters is this, that whether you know the formation for this or not. This I will be doing in my next classes about the future tense family. But सोचा कि थोड़ा exercise करवा देता हूँ. Most of the people are telling me, so I am doing it with only the present tense family and the past tense family. Okay. Now coming back to the example, I will be writing my exam this time tomorrow. So this is a sentence of future continuous tense. ठीक है ना? इससे पता चलता है will be writing. Will be is future and be writing is continuous. So I get to know this that ये आपका हो जाता है future continuous tense का होने वाला है. How do we convert this? Past है जहाँ पर future का helping verb है वहाँ आ जाएगा past का helping verb. So I will be is the helping verb for the future continuous.
तो पास्ट में तो बी लगता नहीं है, तो दिस गेट्स इरेज्ड. सो आई वॉज हो जाएगा दिस थिंग टिल हियर will remain the same. I was writing my exam. Now, this time I was writing my exam this time. Till here it is same. यहाँ बदलाव आया. Will becomes was. Be gets excluded. Now tomorrow. ये तो future tense से बात था ना. This was in future tense. अब tomorrow का past tense क्या होगा? Think. It's very simple यार. क्या? Yesterday. I was writing my exam this time yesterday. Simple, sweet. Sentence को the more you break it up, the more easier it will be for you to convert a sentence. So I will be writing my exam this time tomorrow था, past continuous था. तो I remains I, will था future tense के helping verb, past tense के helping verb क्या होता है? Past tense के helping verb होता है was. Continuous will never change in both the part. इधर भी क्वेश्चन में जो continuous रहेगा वो आपका इसमें भी continuous में रहने वाला है. ठीक है. एंड देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आता है, टुमारो था बिकॉज वो कल होने वाला था और इसमें हम लोगों को हो चुका में कन्वर्ट था करना था, इसलिए टुमारो बिकेम yesterday. So I hope so my fourth example is also clear. चलो आगे बढ़ता हूं. Last example for today. See, I will break up my classes into few parts, okay? Because मैंने आज present perfect continuous tense को आपको स्टेटस शो नहीं किया है. I was waiting for the future tense to be completed. उसके बाद नहीं करवाऊंगा. तो for the meantime, I'll take break from English once again. I'll go back to maths, and thereafter again, after I finish few concepts of maths, I'll come back to English. Okay. So the final one. It's an easy one. I know this. अरे हमको तो पता ही है ये बात. No, this is a question. I know this. Okay. Now what we have to do? We have to convert into simple past. Okay. Now, I know this. मुझे पता ही है, तो मुझे पता है तो आंसर क्या होगा? Now, first of all, step 1 क्या था? Find out which tense does the current sentence belong to. Helping verb देखो, है नहीं. Action देखो. Action is here. Action है तो देखो, पूछो उससे in which tense भैया, knock knock, which tense do you belong to? हाँ, which tense? तो ये हो गया present tense का family का. This action belongs to present tense. Now, simple past में क्या होगा? This and this will remain the same. No बन जाएगा new. ठीक है? I knew this. So answer लिखता हूँ फटाफट. I knew this. वाह भाई वाह. कॉन्फिडेंट देखो लड़का का, उसको पता ही था. ऑब्वियसली पता हो गई ना. So I end my class out here, and I hope so that everything is understood right now. Okay, and I will be moving on to my next exercise after a few days. But for the meantime, I'm keeping it till here. जब हम लोग रिटर्न बैक करेंगे with the language classes, I will make sure that I'll do 2 more exercises on this chapter, and I will move forward with the other chapters of grammar. Why tense? मैं tense क्यों करवाया पहले? तो tense, I think according to me, is the mother of all chapters. Actually, हर एक chapter interlinked होता है, but tense is a chapter which creates a sentence formation for the higher section as well as the junior section. So, there's for example, active and passive voice, direct and indirect speech. All these require the concept of tense. If you know this, those chapters will be very easy for you to understand. So hence, that is why I started with the 10th chapter, and I hope so. इतना कागज मैं ले चुका हूँ उसके ऊपर, and I hope so you are getting the concept cleared. And if you are not cleared, please watch my video, or you may text me on the comment section, and I will surely reply to your comments. And I hope so. Today's class was very interesting, and I hope so all the examples which I have shown today is clear to you, and I hope so your child will get that much of confidence that he or she can attempt the paper and will get score and will get good marks.
Thank you so much and I hope to meet you in my next video. Bye bye, take care and good night.